तो लाइव हैं हम इस वक्त और कल शानदार जीत हासिल की इंडिया ने। और ऐसा लग ही नहीं रहा था, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि वेस्ट इंडीज कोई मुकाबले में नहीं होगा भारत के इस पूरे दौरे में। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि एक ज़माने में वेस्ट इंडीज बहुत ही खतरनाक टीम हुआ करती थी, और आजकल उनको इस तरह से देखकर बहुत दुख होता है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम अनाउंस हो गई है। मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई है टीम को देखकर, क्योंकि वो क्लियरली वनडे क्रिकेट में इस वक्त एक अलग टीम बना रहे हैं, जिसमें कोई भी T20 टीम का खिलाड़ी नहीं होगा। तो मुझे तो कोई हैरानी की बात नहीं हुई है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग को हैरानी हुई है। कुछ सवाल ले लेते हैं। चयन कालरा खेल रहे हैं, सर वाई दीपक हुडा आउट ऑफ कंटेंशन फॉर T20 वर्ल्ड कप एज इज इन वर्ल्ड कप स्क्वाड, व्हाट रॉन्ग डिड ही डू? ही डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग यार। आई थिंक उसको अभी भी मौका मिल सकता है। तो आई थिंक दैट डोर इज नॉट क्लोज्ड ऑन हिम। KL is injured again at the cost of reputation. I firmly believe he should not be considered for multi-nation tournaments now. उत्कर्ष, कोई खबर पक्की नहीं है KL राहुल को लेकर। अगर वो फिट नहीं है तो वो सेलेक्ट नहीं होंगे, एज सिंपल एज दैट। विराट कोहली इज नॉट इन जिम्बाब्वे एंड हुडा के प्लेस पे श्रेयस चल क्या रहा है? काफी पजल्स बना रहे हैं रोहित शर्मा और द्रविड़ कोहली को ले जाने वर्ल्ड कप। यार विराट कोहली तो ड्रॉप नहीं होने वाले। आप और मैं कुछ भी कह लें, विराट कोहली ड्रॉप नहीं होगा अनलेस विराट कोहली हिमसेल्फ ऑप्ट्स आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। Who better than you, Chandraji, to answer this question? What are the biggest positive changes you see in today's Indian cricketers compared to 1980 90s? I think the biggest thing is the confidence factor. They are much more confident than, definitely much more confident than the lot of the 1990s. That much I can confirm for sure. The lot of the 1990s were not so confirmed. I'm really surprised to discover that Sky has very poor matchups against so left armers. Jadeja has a strike rate of 78, Aksar, and so on. I think he'll get better. Is Sky dropped from ODIs or he rested? I think rested. सर शमी का कोई चांस है या नहीं है T20I में अभी ODIs के परफॉर्मेंस पे? अगर उसको पिक किया होता तो आंदोलन करूंगा। नहीं करेंगे उसको पिक। क्या स्काई को आपने कराने में को ओपन कराने का मतलब DK वर्सेस पंत है? क्या टीम मैनेजमेंट इस सीरीज के बाद कॉल लेगी? बिल्कुल कॉल लेगी। हम जो बाहर बैठे हैं, हमारे लिए हर बायलैटरल T20 और वनडे और लाइफ एंड डेथ का सवाल है। टीम के अंदर है, स्पेशली एज लॉन्ग एज राहुल द्रविड़ इज देयर, ये बायलैटरल वनडे एंड T20 इज नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। दैट इज द बॉटम लाइन। Is it as an advantage or disadvantage to play the series with teams which are in your group just before T20 World Cup? Australia is doing that with New Zealand and England in Australia. I don't think they're playing England right now. They're playing New Zealand only. One dayers. सर रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट में शॉर्ट बॉल पे सिक्सेस मारता है, टेस्ट में कैसे आउट हो जाता है? टेस्ट में फील्डर्स कहीं पे भी रख सकते हैं ना, इसलिए होता है ऐसा। क्यों श्रेयस अय्यर को खिलाया गया दीपक हुडा से पहले? क्यों ये टीम मैनेजमेंट फॉर्मेट्स को नहीं समझती? आई थिंक दे जस्ट वांट टू गिव इनफ चांसेस टू श्रेयस अय्यर बिफोर दे ड्रॉप हिम completely. Sir, in previous video you said the purpose of CWG. Can you share with me also? I don't know. I don't know the purpose of CWG myself. I think the CWG has no meaning in my view. मतलब नहीं है उसका। CWG का मतलब है आप गुलामी को नतमस्तक है, गुलामी को नमस्कार कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम गुलामी के चंगुल में फंसना चाहते हैं इस वक्त। हाउ इज DK's विकेट कीपिंग स्किल्स? इज इट गुड? बेटर? Is it good? Only Pant can play on the basis of better keeper than Karthik. Karthik is not that great a keeper in comparison to Pant. Previously, I said that Kohli played only 4 T20s of the World Cup, but KL has played only 3. Yes, that's right. In Test cricket wise, Joe Root better than Steve Smith, even though Smith has 60 average and Root has 50. That is because currently he's in a very good form. That's why current form matters a lot. His team management decided that they pick Ashwin over Washington Sundar for T20 World Cup. I think that is more or less certain. वॉशिंग पाउडर का क्या हुआ? वॉशिंग पाउडर आ गया ना वापस वनडेयर्स में। ये सूर्य कुमार क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर पे बार बार आउट होता है? आई थिंक दैट इज समथिंग फॉर हिम टू वर्क ऑन। Virat Mohammad Asif said Virat Kohli is bottom end player. Once he get declined, he can't come back. What are your views on that? That's his view. Yeah, I'm not concerned about it. सर हमारे गली क्रिकेट प्लेयर्स को भी पता है श्रेयस अय्यर इज नॉट सुटेबल फॉर T20. हुडा इज सुटेबल। फिर ये जो ज्ञानी लोग बैठते हैं टीम मैनेजमेंट में, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती?
उनको ये बात समझ में आती है और वो पूरा मौका देना चाहते हैं उनको फेल होने के लिए। मलान, बेस्टो, स्टोक्स, मोइन अली, लिविंगस्टन, मार्श, आई थिंक आई पिक मार्श, स्मिथ, स्टॉइनिस, मैक्सवेल, टिम डेविड over the other one. Is desperate to fit in T20 team, whether as an opener or middle order. Still no results after 52 games. I wonder if it was any other player, he would have been dropped till now. I think पंत के में जो ability है उसको सब लोग recognize करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्या विराट कोहली को जिम्बाब्वे जाना चाहिए था? अब उसका फॉर्म पहले जैसा नहीं रहा। वो कैसे क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट रन बना पाएगा एशिया कप में? पर उसकी क्या गारंटी थी कि वो जिम्बाब्वे में भी रन बना देता? मेरा ये काउंटर क्वेश्चन है। कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? सर टीम इंडिया इज प्लेइंग ट्राइंग टू अकोमोडेट पंत, व्हाई हैज टू प्ले? कोई मैंडेटरी थोड़ी है पंत को टी20 खिलाने में, कोई मैंडेटरी नहीं है, मौका दे रहे हैं क्या है? हु इज बेस्ट, पंत और किशन? राइट नाउ पंत इन टेस्ट एंड वनडेयर्स, नॉट सो मच इन T20s. Why Ponting is not included among Tendulkar and Lara? Because he didn't play against Megra and won, or is there any other reason? No, there is no other reason. सूर्य कुमार यादव को पूरे सीरीज में ओपन करते हुए देखेंगे हम, या 3 मैच बाद कोई और आएगा? आई थिंक आप अगले मैच में अगला प्लेयर को देखेंगे। हु इज मोर डेंजरस T20 बैट्समैन, लिविंगस्टन और कार्तिक? आई थिंक लिविंगस्टन। नो केएल इन जिम्बाब्वे टूर, व्हाई केएल एंड पंत आर सर्टेन फॉर वर्ल्ड कप? राहुल इंजर्ड रहता है एंड पंत परफॉर्म नहीं कर रहा है। पंत वनडेयर्स में तो परफॉर्म कर रहा है ना, दैट्स व्हाई इज नॉट बीन पिक्ड। This West Indies is weakest team ever of all time. Yes, in T20 cricket, yes. डीके पे 1-2 मैच पे कॉल लिए जाता है, पंत पे 10-20 मैच पे के बाद भी कोई कॉल नहीं ले रहे। लेंगे भाई लेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। इज लिविंगस्टन वेस्टिंग हिज अपॉर्चुनिटीज इन ओडीआईज एंड आल्सो इन T20 फॉर इंग्लैंड? आई थिंक फॉर्मेट ऐसा है ना, यू कांट ब्लेम हिम आल्सो। Do you think Jason Roy is suitable for T20 cricket, or his best format is T20 ODIs? I think he's suitable for T20. Sir, you are not at all punctual. I'm really sorry, my friend. I think Rohit and Dravid thought opening with Surya can be beneficial for him. Gets enough game time and can be handy when the king gets out to. Yeah, absolutely. Yeah, I don't see any big problem in that. जब सुंदर अवेलेबल होगा तो कौन खेलेगा, अश्विन और सुंदर? बिकॉज अश्विन ने अच्छा किया फर्स्ट मैच में। आई स्टिल थिंक अश्विन विल गो टू द T20 वर्ल्ड कप। If KL Rahul is injured, once again, he should not be selected in T20 World Cup. I'm pretty certain if he's injured, he will not be selected. Your current 5 favorite cricketers who are not from India: Ben Stokes, Glenn Maxwell, uh, Joe Root, Pat Cummins, and Rasi van der Dusen. सर ये इंग्लैंड टीम जेम्स विंस जैसे प्लेयर को क्यों नहीं खिलाती T20 क्रिकेट में? वो ज्यादा तेज खेलता है रॉय से। यार कहाँ फिट कराए हैं? अभी रॉय अभी फॉर्म में नहीं है, शायद करेंगे। Why Virat KL not included in Zimbabwe tour? Because they will go to Asia Cup. That's why they are not being included. Why KL Rahul not included? बताया मैंने। Poor shot, didn't have a clue against Bishnoi balls googly. Absolutely. तो खलील अहमद को जिम्बाब्वे क्यों नहीं लेके गए? ओडीआई क्रिकेट में कोई लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट आर्म बॉलर होना चाहिए। Very bad pitch for T20 cricket. I've got to say, yeah, I get to agree with you on that. इंडिया का रियल चांसेस बताओ फॉर T20 वर्ल्ड कप? दे विल बी अमंग द टॉप कंटेंडर्स, दैट मच इज फॉर श्योर। दीपक चहर का कमबैक हुआ है बिल्कुल। बाय वेस्टिंग अ टाइम इन पंत एज विकेट कीपर बैट्समैन, ये केएल राहुल एज विकेट कीपर बैट्समैन। बट केएल राहुल फिट कहाँ है मेरे भाई? सर एशिया कप में कौन जीतेगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में? आई थिंक इंडिया इज द एज। सर आप पहले से बोला भी कहा था कि आप मिड इनिंग्स पर लाइव किया आया करो, प्लीज आ जाते हैं कल से। चेतन सकारे ने अच्छा किया था ओडीआई फॉर्मेट में, उसे क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? आई थिंक उसको नहीं अभी कंसिडर करेंगे, उसका टाइम चला गया अनफॉर्चुनेटली, उसका टाइम नहीं आएगा। सर जी पंत को सिर्फ कीपिंग के लिए रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ रवि जडेजा अगेन प्लेइंग इन सीएसके फॉर नेक्स्ट सीजन? बहुत वक्त है, कुछ भी हो सकता है उसके प्लेयर। और प्लेयर्स लाइक श्रेयस हु आर गुड इन ओडीआई नॉट शोइंग इंटरेस्ट, ऐसे तो कुछ नहीं जतिन। By observing the Zim squad, more or less T20 squad is clear. Only choice is between Ash or Bishnoi. Yes, and I think that it is between Huda and Shreyas. Otherwise, the squad is more or less clear. क्या नेक्स्ट T20 में ईशान किशन को मौका मिलेगा? नॉट सो सून। क्या बात बकवास बात है, अय्यर हुडा से ऊपर है T20 में, कैसे? गलत है बट ठीक है, बकवास बकवास ना कहें। Why wasting our time? अय्यर को T20 क्यों खिलाते हैं? I don't understand. Even I don't understand.
According to PTI, KL has dodgy hamstring and ruled out for Asia Cup. That's why team management trying different opening combination. Quite possible, yeah, quite possible. I agree, sir. Batting order should be fluid, but with KL, if KL is injured, should India find an opening partner for T20? Pant, Virat, Ishan, Sanju, anyone? They will find. Yeah, don't worry. Who is better in T20? Deepak Chahar and Shardul Thakur. I think Deepak Chahar is slightly better. It looks look like team management higher is ahead of in the pecking order for from Huda. Absolutely. सर किंग कॉन्ग को हरारे जाना चाहिए था. कोई फर्क नहीं पड़ता यार वो जाता है नहीं जाता. केएल कैप्टन ईशान गिल श्रेयस संजू विकेट कीपर हार्दिक जड्डू दीपक चहर प्रदीप प्रसिद्ध बुमराह कुलदीप ओडिया 11 आफ्टर 23 वर्ल्ड कप ओके. अपूर्व देसाई मोंटी देसाई लालचंद राजपूत तीन नो मैं से किसको नेपाल का कोच रखने से अच्छा होगा. लव फ्रॉम पशुपति नाथ जय शंभू दीपेश मोंडाल मेरे हिसाब से मोंटी देसाई को होना चाहिए. West Indies batting clueless. They need flattest wickets. If someone assists, they will fall like pack of cards. Yesterday was very embarrassing. Very embarrassing. Uh, हुडा को T20 खिलाना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक सर? यस इसको खिलाना चाहिए और उसको खिलाएंगे. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन सोल्यूशन कुछ पता नहीं. आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन. शुक्ला मयंक शुक्ला कोई कंफ्यूजन नहीं. द्राविड साहब सबको खुश करने में लगे हुए हैं. बिल्कुल नहीं ऐसा आपको लग रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. विराट के लिए न्यूज आई थी वो जाएंगे इसका मतलब वर्ल्ड कप में 1 2 3 आपका 2021 वाला ही रहने वाला है. उम्मीद छोड़ दो अब इंडिया की अच्छा करने की वर्ल्ड कप में. ओके सर before few hours why Virat and KL not there? Report says Rahul injured again. So he must be injured and Virat I think they don't want to play him. It looks like all other remaining 16 members will play for Asia Cup. Absolutely, that's what it looks like. Who is backup for Hardik right now? It doesn't. It looks like Deepak Chahar and Harshal Patel will have to perform that role. According to you, who will play the next WTC final? According to me, it will be Australia and South Africa. It looks like the same team will play against South Africa ODS. Yes, I said on July 21st. केएल राहुल अगेन इंजर्ड. इज इट द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्योंकि अब कोहली ओपन कर सकता है. पंत स्काई हार्दिक सब फिट हो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल सर. पंत किस बेसिस पे T20I खेल रहा है और बी कीपर्स एंड संजू तो अब काफी कंसिस्टेंट दिख रहा है. कॉन्फिडेंस भी अच्छा लग रहा है. आई थिंक पंत इस बेसिस पे खेल रहा है क्योंकि वो इस वक्त इंडिया का सबसे टैलेंटेड विकेट कीपर है. वो इस फॉर्मेट में नहीं चल रहा. वो धीरे धीरे पता चलेगा. Who will be vice captain in Zimbabwe tour? गिल और सिराज. वो अभी तक नॉमिनेट नहीं किया गया है. But I think you might see on this particular tour, you might see Aksar as the vice captain, or maybe even Shardul Thakur हो सकता है vice captain. Shubman Gill is not a bad call also. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन जीतेगा एशिया कप में? मुझे लग रहा है स्लाइट एज इंडिया का है. Ashwin is playing due to biasness of Rohit. ये किसने कह दिया आपसे? ये किसने कह दिया? Sanju is vice captain for Zimbabwe ODS. I don't think so, यार. I'll be very surprised. Shreyas is tuk a year, okay? बीसीसीआई में बैटिंग में करुण नायर की वैल्यू को कभी समझ में नहीं आया. कम से कम उमरान मलिक जैसे बेहतरीन बॉलिंग टैलेंट में ठीक से इन्वेस्ट करने में बोर्ड सोचे. बिल्कुल इन्वेस्ट कर रहे हैं. डोंट वरी अबाउट इट. आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग ऑफ धोनी द्रविड बट ही हैज सर्टेन फेवरेट्स and rigid in some cases, but he still has given matches to youngsters to prove themselves fully. I agree with you. Sagar video chat Monday से. Australia is playing T20s versus England and New Zealand in September after New Zealand ODS. Okay. Uh, I don't think they're playing England in ODS. Are you sure about that? I don't think that's the case. I'll be very surprised. Oh, okay, they are. They are New Zealand. They're not playing New Zealand in T20s. They're playing New Zealand in one days. They're playing England in T20s. Iyer and Pant are only playing due to JSW owner link with Ganguly. I don't quite think so, yeah. Rishabh took Pant. Okay.
You think Pant opens on Monday or same order? You never know. T20 cricket, you have to be guessing always. Even Zim were doing better under new coach they have. Okay, सर हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्यों प्लेयर नहीं सेलेक्ट करते? हम करते हैं बॉस. वाई पंत इज नॉट परफॉर्म इन T20? प्लीज ऑनेस्ट मैच बताओ. एक मैच बता दो उसने जिताया हो इन T20. नहीं जिताया बिकॉज द नंबर ही कम्स एट इज वेरी डिफिकल्ट टू विन मैचेस एट दैट नंबर. मुश्किल होता है. Why are you wasting your time? Why you are Kohli hater? I'm not Kohli hater, my friend. एज T20 एक कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट है. उसके प्लेयर सेलेक्ट करने के लिए भी ऐसे सेलेक्टर्स होने चाहिए जिन्होंने T20 खेला हो या फिर अच्छे से फॉर्मेट को समझते हो. आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली ऑन दैट. कम्प्लीटली एग्री विथ यू ऑन दैट. Karthik Jain, I will do. So I have strong feeling ईशान इज गोइंग टू बिकम बेस्ट विकेट कीपर ऑफ इंडिया. उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं पर ईशान और पंत एक जैसे ही खेलते हैं, लेकिन ईशान को लोग काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं. एब्सोल्युटली. केएल राहुल एंड रोहित शर्मा बहुत इंजर्ड होते हैं. आई गॉट टू एग्री विथ यू ऑन दैट. पृथ्वी शर्मा, पृथ्वी शॉ, व्हाई नॉट? आई डोंट थिंक सो यार. आई डोंट थिंक राइट नाउ. दैट्स इट. पृथ्वी शॉ इज फिनिश्ड ओवर. मतलब एज एन राइट नाउ ही वोंट बी कंसिडर्ड. सो एशिया कप में वीडियो स्ट्रीम करेंगे यार भाई. करेंगे करेंगे. यू थिंक स्टोक्स कैन ओपन इन प्लेस ऑफ रॉ इन T20? ही कैन. कल अगर होल्डर नंबर 3 पे आ सकता है तो कुछ भी हो सकता है. युवराज सिंह sharing tips to Indian batters, is that indicating Yuvraj will become batting coach after Vikram Rathore? No chance. Park is favorite in Asia Cup. Okay. बैटिंग में शुभमन गिल, फास्ट बॉलिंग में रवि उमान मलिक और स्पिन में रवि. ये फ्यूचर में वेल डिजर्विंग सुपरस्टार समझे. क्या हुडा एंड किशन को वरुण और राहुल चहर की तरह ड्रॉप कर देंगे? नॉन परफॉर्मर पंत और विराट खेलेंगे. देखते जाइए क्या होता है. KL should drop and Shikhar Dhawan should play. Okay. I don't think that will happen in T20 cricket. Who is dangerous batsman? Hardik versus Surya. Surya. जिसको भी रेस्ट मिला है जिम्बाब्वे टूर में, इट्स गुड. इतना नाराज क्यों है फैंस? मुझे भी नहीं समझ में आया. स्काई 108 इनिंग्स 84 छक्के. केएल राहुल 100 इनिंग्स 164 छक्के. वाह. Can DRS system be managed by home team and gain advantage, or it still stay neutral? Remember Dean Elgar, LW and RSA of Ashwin. I think it can. It will remain. It remains neutral. Is this the weakest West Indies team ever? Absolutely. सर आपने बोला था, बोला ओडीआई की न्यू टीम बन रही है, तो क्या अगर इस T20 वर्ल्ड कप में रिजल्ट नहीं आता तो क्या रोहित और विराट पर कॉल लेंगे T2023 वर्ल्ड कप में? ओडीआई क्रिकेट में उनके ऊपर कॉल 2023 वर्ल्ड कप के बाद होगा. T20 क्रिकेट में इस साल के वर्ल्ड कप के बाद नहीं. सर केला आउल नहीं खेलता, खेला तो इंडिया का भला होगा. क्या बोल रहे हो? Can Zimbabwe surprise India? Will be difficult. Sir, have you seen Black Caps opener Finn Allen 100 versus Scotland? Why RCB wasted him at bench in IPL? They have wasted. They have wasted him. I'm sorry to say. Pant should be second opener. Sky should bat at 4 as Pant can clear 30 yard circle. Interesting. So what is your thought on previous match of India versus Australia women? India और ऑस्ट्रेलिया women के क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क है. I will be very surprised if India consistently beats Australia in all formats. It's going to be very difficult for India. Very, very difficult. जिम टूर ही होता है जिसमें आप न्यू प्लेयर्स को चांस दे सकते हैं और डेब्यू ही करा सकते हैं. इतना है. तुबा है मीडिया में और सोशल मीडिया में. ओके सर, क्या मिडिल ऑर्डर को ज़्यादा चांस देना चाहते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर पाते हैं? हो सकता है. हो सकता है भी. बिल्कुल हो सकता है. I want to see Huda at 3 in World Cup. Do you see him playing? He's wonderful off spinner as well, explosive batter. I think he'll somehow find a place. Can Zimbabwe give competition to this Indian team? It's going to be difficult for them. Who should open in Asia Cup now with Rahul being injured? Pant or not? I think it could be anybody. Pant, Virat Kohli. Personally, I would like to see Virat open. Vikrant Gupta should be Indian selector. No, I don't think so. No sound. आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है?
इतने जोर से बात करो यार। भी बताइए, थोड़ा डिफरेंट टीम लग रहा है इंडिया की T20 आफ्टर लास्ट T20, क्या जीत सकते हैं? लक्स जीत सकते हैं। व्हाट आर द चांस ऑफ इंडिया इन WTC फाइनल? इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सर केएल राहुल, संजू किशन सब 2 साल से आईपीएल में आप अच्छी कीपिंग करते हैं, तो अच्छा है ना, अच्छा ऑप्शन मिलेगा। वाई जिम, वेस्ट इंडीज जिम, आयरलैंड नॉट इम्प्रूविंग? बिकॉज द टैलेंट पूल इज वेरी स्मॉल। कृणाल पांड्या को भी सिलेक्ट करना चाहिए था। ही हैजंट परफॉर्म बैड इन ओडीआईस। आई डोंट थिंक he'll प्ले इन ओडीआईस बिकॉज अक्षर पटेल है पहले से। नेक्स्ट मैच में मुझे लग रहा है कुछ अलग होगा ओपन। हुडा better than Iyer in T20s, do you agree? Slightly better, yes. He bowls, that's a big difference. Yesterday win will be special because despite losing 4 wickets, India scored 190 runs. I hope DK will succeed in upcoming matches. I also hope. Zimbabwe series is part of Super League. It is very important for Zimbabwe, not for India. ईशान पंत सैमसन है इंडिया के नेक्स्ट सुपरस्टार वर्ल्ड अवेलेबल प्लेयर। पागल, अनुष्का 2015 से ही शादी से खेले, टू रन्स क्यों नहीं बने सालों बाद? बंद करो अनुष्का शुक्ला। क्या यार, क्या बोल रहे हो भाई? मेरा हार्दिक इज वाइस कैप्टन yesterday, so it is confirmed that Hardik is preferred. Then Pant, etc., etc. If KL comes in, who will be vice captain then? Hardik or KL? KL. Why you are not doing live with Rahul Rawat? I am supposed to do one. I'll do. Sorry to say, sir, but I never see my real 11 playing 11 playing T20 match. Any team when it will happen? Asia Cup. Uh, top 4 teams in modern cricket in all formats. In Test cricket, right now it's Australia. In One-Day cricket, right now it's South Africa, and in T20 cricket, right now it's got to say Australia. आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के विकेट पर वर्ल्ड कप में कितने स्पिनर खेल सकते हैं टीम में? एक के दो के तीन, दो खेल सकते हैं क्या 11 में? बीसीसीआई और खासकर सेलेक्टर्स को कुछ प्लेयर्स के ऑब्सेशन से बाहर आना चाहिए। या तो उन प्लेयर्स को परफॉर्म करना चाहिए या फिर कंप्लीट स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर कर देना चाहिए। आई थिंक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वेरी सून। सर व्हेन इज वाइक हैसन विल बिकम हेड कोच ऑफ इंडिया? डू इंडिया नॉट कंसीडर? वी केम वेरी क्लोज लास्ट टाइम व्हेन रवि बिकेम, पर उसके बाद उन्होंने अप्लाई नहीं किया। Oz didn't give NOC to David Warner. What should David Warner do now? Retire or anything else? He'll have to continue if he wants to play Test cricket for Australia. Pant is big match player, that's why he's getting. I agree with you on that, Manvi. Chances of Sundar and Deepak. I think Deepak Chahar, Deepak Huda, and Washington Sundar. All these 3 cricketers still have an outside chance. T20 World Cup बहुत cruel format है, बिल्कुल। Sir, Surya is better in middle order. Surya is kind of player he can bat anywhere. So why we have small yardstick for DK position he bats? He will 2 out of 5 times. Absolutely, यार, I agree with you. सर अगर मुश्किल होता है तो वो कार्तिक क्यों उसके बाद अच्छा करता है, कर देता है? कितना डिफेंड करोगे? मैं कोई डिफेंड नहीं करेगा मेरे भाई, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। दीपक हुडा इज मच बेटर देन श्रेयस है। दीपक इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही टेक द गेम अवे फ्रॉम ऑपोजिशन। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। India again will not qualify for semi-finals. Let's see. Do you see Ajinkya Rahane in ODI? No. That ship has sailed. बीसीआई को नेपाल जैसे देश को हेल्प करना चाहिए तो डेवलप क्रिकेट इन आवर कंट्री। आपको क्या कहते हो? मैं बिल्कुल मानता हूँ यार, बट करते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पृथ्वी शॉ, गेल, निशान will be permanent players after 2023 World Cup. Venkatesh Olla. But in which format, my friend? Which format? Probability of Indian team lifting Asia Cup, pretty good chances. हमें तीनों फॉर्मेट में फिटेस्ट कैप्टन चाहिए। एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। I'll tell you my 5 seamers for the World Cup. बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, दीपक चहर if he's fit. These are my 5 seamers for the T20 World Cup. अब बाकी का 10 मैं कल बताऊंगा। Do you believe Surya and Rohit can open in World T20? I will back Surya. I don't think that will happen. Why? Group A for T20 World Cup, England, Australia,
New Zealand, Afghanistan, Ireland, West Indies. Pick two teams for semis. I will pick England and Australia. सेकंड T20 आवेश एंड गायकवाड को चांस देना चाहिए. गायकवाड है ही नहीं यार स्क्वाड में. शहजाद, रसल एंड पोलार्ड क्या लीग्स को भाव देते हैं? बिल्कुल देते हैं. पोलार्ड तो है ही नहीं ना अभी. पोलार्ड इज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. I feel West Indies should recall Naveen and Andre Russell in the team. They will. Harsh Jain, में तो it's automated. If you want to use super chat, you can. मेरी बुक Amazon पे मिलेगी. 10 तारीख से अवेलेबल है. When Tendulkar used to go and play small teams like Zimbabwe, Kohli is very selective and behaves like he's above cricket, unlike our great Dhoni and Sachin. Even before he became great, Kohli used to go and play. Dhoni went only because he was not playing any other format. Sachin last played in Zimbabwe in 2005. After that, he has never toured Zimbabwe. DK, you see Udda surprise a year. In T20, quite possible. Sir, Australia women's team resembles like vintage 90s and 2000 Australia men's team. Absolutely, yeah. Absolutely. चलें, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. कल या परसों फिर मुलाकात करेंगे और आप लोग सबके फरमाइश पर मैं शॉर्ट्स डालूंगा और कम्युनिटी पे और ज़्यादा पोस्ट करूंगा. मिड इनिंग शो करूंगा और राहुल रावत और विक्रांत गुप्ता के साथ लाइव करूंगा. तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया. प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें. गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस.